ma'am. I think your PPT is visible, everyone. No? Is it visible, sir? Yes, yes, ma'am. Yes, it is visible. Good evening, everyone. For this teacher training workshop on strategies for effective teachings. First of all, I welcome our resource person, Dr. Nusaiba Anzar, College of Teacher Education, Sambal, Maulana Azad University, uh, and participants. We are truly delighted with our presence. We all have gathered here today to attend this one-week teacher training program on strategy of effective teaching, which is conducted by Bharat Digital Academy. I hope this teacher training will provide a new direction for your goal. I know that some participants are new in this workshop, but don't worry. We will learn a lot of strategy regarding teacher teacher student relations. If there is any doubt, you can ask before the start this session. I want to tell you that we will cover topic in this teacher training programs are effective, effective classroom management strategies, effective teaching and its characteristics, inclusive education issue and challenges in implementation, role of the counseling in dealing with mental health problems, communication skills for effective teaching, and our resource person are from the most experienced faculty from the various universities. Our resource person are in this entire whole workshop. Speaker are Professor Akbar Hussain, Department of Psychology, AMU Aligarh, and ex-Dean Faculty of Social Sciences. Professor Gunjan Dubey, Department of Education, Aligarh Muslim University, Aligarh. Professor Abid Siddiqui, Department of Education, Aligarh Muslim University, Aligarh. Dr. Mohammad Basheer, K. AMU Center, Mallapuram, Kerala, and Dr. Nusaiba Anzar, Maulana Azad National Urdu University. First day of this training program, Dr. Nusaiba Anzar from the Maulana Azad National Urdu University will deliver lecture on effective classroom management strategies where we will learn about the classroom management system and more. Firstly, I want to introduce our resource person, Dr. Nusaiba Anzar. She is currently working as an assistant professor in Maulana Azad Urdu National University, hosted at College of Teacher Education, Sambal. She has also worked at the MANUU CTE Asansol as an assistant professor. She has studied her MSc in Mathematics in Hindu College, Moradabad in 2009. She studied at Aligarh Muslim University for her B.Ed, M.Ed, and doctorate degree in education, and later joined as an assistant professor in Department of Education, AMU, Aligarh. In 2018, where she rendered her service for the 2 year, she qualified GATE in mathematics in 2010, UGNET in education 2013, and UGC JRF Plus in education in year 2000, 2014, 2014 and 2015 respectively. She has also qualified CTET in mathematical science. She was also upgraded for UG SRF during her research period. In addition, she has published 7 significant research papers mainly in field of mathematics education and presented numerous research papers and articles in various national and international conferences. She has also authored a book titled Mathematical Aptitude and Achievement Among the Muslim and Non-Muslim Adolescents. She was assistant proctor at CTE Asansol and held various administrative posts at her college. Her focus area consists of mathematics, education measurement and evaluations, statistics and inclusive education. Before the starting this training program, I want to introduce Bharat Digital Academy.
Bharat Digital Academy established in December 2021. We have conducted more than 50 workshops, webinars, faculty development programs in various topics like teacher training programs, software management workshop, data science related workshop, personality development and orientation program for the PhD, entrance exams, and many more. Main object of Bharat Digital Academy to provide training to professional students to improve skill. Under this academy, we will provide teacher training programs, software training, soft skill training, personality development, digital skill development, competitive exam coachings, career counseling and guidance. We maintain quality in all these courses which will be bring revolution of the academic world. Without taking more time, I invite Dr. Nusaiba Anzar with this शेर जिंदगी का हुनर सीखते हैं जहाँ भी जाते हैं नया सीखते हैं कोई बता तो दे मुझे मेहरबा वो कहाँ कहाँ से सीखते हैं तो I welcome ma'am kindly deliver your lecture Nusaiba ma'am. Thank you so much, sir. Uh, Thank you for this honor and thank you for having me here. I would like to congratulate Bharat Digital Academy and the management and the organizers of this program for having me here to deliver a lecture and discuss on this very relevant topic. I would really like to congratulate Bharat Digital Academy for organizing this very pertinent 1 week teachers training program on this effective teaching strategies. ये अपने आप में एक बहुत ही अहम टॉपिक है अगर हम देखें आज के दौर में तो I would like to welcome all the participants, all the teachers here. As I am told that this is a client, I will be addressing a clientele of all the teachers. So welcome all. Good evening. Assalamu alaikum. जैसे कि आप सभी लोग टीचर्स हैं, मैं भी एक टीचर ही हूँ और बस फर्क इतना है कि मैं डेस्क के उस तरफ हूँ और आप लोग दूसरी तरफ. The only difference is this. And when we talk about teaching, teaching is such a profession and challenging at the same time. ये मैं इसलिए कह रही हूँ. Why is it challenging? Because one of the most commonly confronted challenges which we face is classroom management. अक्सर बेशतर हम लोग इस चैलेंज से दो चार होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो नए टीचर्स हैं, the new teachers only, they are facing this challenge. Even sometimes very professionally experienced teachers, they face this problem of classroom management. वो प्रॉब्लम शायद इसलिए भी आती है क्योंकि हर साल हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बदल जाते हैं and one size doesn't fit to all. Because whatever classroom management strategies which suited one group of students, it's not necessary that it will suit all sort of students. It's a individual difference. It depends on the individual difference and also because of the changing times. I would like to share my presentation here. अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं is it visible my presentation? My slide is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I would like to continue my talk. जैसे कि हम जानते हैं कि now we are living in the post-COVID era. As we see the world now, it has been divided into two eras, which was pre-COVID and post-COVID. Pre-COVID में जो हमारी classes cannot be followed now. Because we have gone through a lot of changes. Ma'am, actually, sorry to disturb you. Your face is not completely visible, ma'am. My Your slide face is not completely visible. Is it visible now? Not, madam. Your face is not
completely visible. Yes, yes. Is it okay now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. But ma'am, your voice and your lips conversation is not matching. The problem is I don't know. It must be some technical problem. your voice and ma'am, your voice एंड योर लिप क्या कहते हैं वो आपको जब जब बोल रही है वो नहीं हो रहा है Sir, it is due to network issue. मतलब मैच नहीं कर रहा है और It is due to network issue, sir. It is. So it would be better. It would be great if you concentrate on my voice. अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है तो it would be convenient for everyone. क्योंकि ये network issue is not in anybody's hand. ओके मैडम अब इट इज गुड ओके लेट्स कंटिन्यू मैम कंटिन्यू Okay. So, yes, I was addressing one of the challenges, one of the recently faced challenges, and that was of COVID. जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम अब पोस्ट कोविड एरा में रह रहे हैं और जो हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज थी विच वी यूज टू फॉलो इन प्री कोविड एरा दे माइट नॉट बी वेरी इफेक्टिव नाउ सो इट इज ऑफ पर्टिनेंट नीड और एक बहुत एग्जिजेंसी है हम लोगों के लिए कि हम अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को अपडेट करें और जो लोग क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ स्ट्रगल करते हैं दे अपग्रेड देयर स्किल्स एंड they create their awareness about classroom management strategies to manage their classrooms effectively, which is very important for teaching learning process, for effective teaching learning process, for learning outcome. So coming to my topic, my today's presentation is based on the following topics. First, we will be discussing what is a classroom. Then I'll come to the topic to what is classroom management. Then we'll discuss how we can manage our classrooms effectively, followed by what strategies should be followed for effective classroom management, and what is the role of the teacher in effective classroom management. I would like to draw your attention on a quote which was given by Kothari Commission in 1964-66, which said, "Destiny of a nation is shaped in its classrooms." यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि how important a classroom is in our teaching process, our education. It holds a lot of value. It is an integral part of our complete learning process. तो ये क्लासरूम आखिर है क्या? What is a classroom? हम किसको क्लासरूम कहते हैं? A classroom cannot be defined as a four-walled room. It cannot be confined to it. हम कहते हैं कि क्लासरूम एक स्कूल का where teaching learning process takes place, followed by other activities of the teacher. It can be like going to the class, marking the work, or planning the lesson, or teaching the students. And it can also serve as a place for learning as well as social interaction of the students. तो जब हम क्लासरूम की बात करते हैं तो we idealize or we imagine a classroom which seems to be ideal. अब आप जो अपनी स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे हैं, can you see a picture of a classroom on your screens? Yes. Yes, ma'am. What kind of a classroom? What kind of a classroom it is? Everyone suppose कि ये एक ideal class है वहाँ जहाँ पर students actively engaged हैं. और in other words, we can say that it is a well-managed classroom, well managed by the teacher. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि what is a well-managed classroom? Well-managed classroom में students किस तरह से होते हैं? What are the qualities of a well-managed classroom? We say that in a well-managed classroom, students, they totally concentrate on their work. They deeply and keenly, they are involved in their work, as you saw in the last picture. Students are very active. Students are very attentive towards the teaching. They are very interested towards
whatever teaching learning process goes in the class, student knows what is expected out of them. In a well managed classroom, student knows what is expected, what are teachers expectations, what kind of a discipline a teacher is expecting, या फिर जब टीचर क्लास में आ रही हैं तो what they are supposed to do. ऐसा नहीं है कि टीचर is coming to the class and then students are they don't know what subject they will be teaching, or the teacher will be playing, or the teacher will be teaching them. In a well managed classroom, students, they know how to behave in the class and what to follow, how to follow the teacher's instructions. The climate of the class is work oriented, बहुत relaxed होता है. Work oriented तो होता है, उसके साथ साथ बहुत relaxed और pleasant भी होता है. Class is task oriented. You have to accomplish a task. You have to accomplish a goal in a well managed classroom, and it is very predictable. Predictable से हमारे मायने, हमारे मतलब ये नहीं है कि you can predict each and every activity of the class, or you can tell without going into the class, you can tell which student would be doing what, या कोई बच्चा क्या कहेगा. But predictability का मतलब ये होता है कि एक well managed classroom में आपको पता है कि today you will be going to the class, you will be teaching to the class, they will be learning whatever skill you are going to teach, या कोई भी topic जो आप उनको समझाने जा रहे हैं या सिखाने जा रहे हैं, तो they will be able to learn it, understand it, comprehend it, and they will be able to apply it in solving their problems at the end of the lesson. This is predictability of the class in a well-managed classroom. Also, relatively less time is wasted in a well-managed classroom. अगर आपकी class well-managed है, your less time is wasted. अगर आपकी class, on the contrary, if you are not prepared, your class doesn't know what to do, you are entering the class and they doesn't know what to do. आपने class में पढ़ाना शुरू कर दिया, you are giving them important points, or you want them to note down the important points, and they don't know what to do. Obviously, you will take more time in managing the class, in telling them, in giving the instructions. And on the contrary, there will be a lot of confusion and disruption in the class. But when the class is well managed, you are able to manage the time. There is no confusion among the students. They know what to do. Students are they are ready for the teaching learning process. ये जो readiness है of the students, it is of prime importance in classroom management. जो लोग B.Ed करके आए होंगे, या जिन लोगों ने B.Ed कर रहे हैं या कर चुके हैं, they would be knowing कि जब हम pupil teacher को, जब हम prospective teachers को ये सिखाते हैं, lesson planning बताते हैं, and we teach them the skill of teaching, first and foremost thing we teach them is how to prepare the student for the teaching learning process. उसका पहला स्टेप ही यही होता है, that you go into the class, you interact with the students, and you make them ready to receive the teaching learning instructions. If the students are not ready for the teaching learning process, you cannot teach them. बहुत सारी CBSE बोर्ड में, जहाँ तक मैं जानती हूँ, CBSE बोर्ड हैं और बहुत सारे बोर्ड्स ने, स्टेट बोर्ड्स हैं, उनके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में ये साफ लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट्स रेडी नहीं हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, you cannot teach them. Either you prepare them or you make them ready for the teaching learning process, or you give them some free time or extra time or some break so that they become ready for the teaching learning process. So readiness of the class is very important. How to do that, we'll discuss it further. अब ये जो picture है of the classroom, sometime or the other in our life, we come across such group of students which really mess up the classes, है ना? जरूरी नहीं है कि आइडियली जैसे हमने पहले पिक्चर में देखा था कि सारी क्लासेस ऐसे ही वेल मैनेज्ड होंगी, the students will be disciplined. As this picture depicts, sometimes students are not at all interested in teaching learning process. बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि this is an exaggerated class. लेकिन अगर टीचर के पास क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज नहीं हैं,
they don't know, they don't have the skill, then this is not a distant dream. This is another picture which depicts how mismanaged the classes can be. So what is there apart from this? It's not only about the mischief of the students. अगर हम mismanagement की बात करें तो हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि बच्चे कितनी शरारत कर रहे हैं क्लास में. It is not only about that. Sometimes they go beyond that. Like they keep on irritating the teacher, they keep on disrupting the classrooms. They are very hostile. आजकल के बच्चे जो आप देख रहे हैं, they are very aggressive in nature. They are very aggressive towards their parents, and they are very they don't hesitate in being hostile towards their teachers as well. तो उसके लिए वो क्लास में आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं. आप सभी लोगों ने मेरे ख्याल से, इफ यू आर टीचर्स, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस सम टाइम और द अदर इन योर लाइफ कि होते हैं हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे जो आपको बीच में टोक देते हैं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप फ्लो में पढ़ा रहे हैं, एंड दे आस्क यू सच एब्सर्ड क्वेश्चन, या फिर कुछ ऐसा साउंड कर देते हैं या अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और आपको यू आर ऑफ द ट्रैक and they pull you off the track, and then you deal with them, or then again coming back on the track and teaching them and again starting with the same pace becomes very difficult for the teacher. वो उतना टाइम वेस्ट हो जाते हैं. ये तो आजकल के बच्चों का शौक है टू चैलेंज द टीचर्स अथॉरिटी. Teachers क्या, they challenge everybody's authority. They don't want somebody to they don't want somebody to dominate them, है ना. आजकल के बच्चे ऐसे हैं, तो it becomes very challenging for the teacher कि ऐसे बच्चों को डील करना, and in turn it makes the class very mismanaged. They object such kind of students in the mismanaged classrooms. They object to the course requirements and classroom policies. Course requirements ये होता है कि जैसे आपको आप कोई वो सब्जेक्ट है, उसमें सिलेबस में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है या प्रैक्टिकल करना है, और यू हैव टू सबमिट सम असाइनमेंट्स एज वेल. तो अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कह देते हैं सर या मैम जो भी है कि वी हैव लॉट ऑफ बर्डन ओवर अस, वी हैव टू प्रिपेयर सो मेनी असाइनमेंट्स, वी कैन नॉट मेक दिस असाइनमेंट, और वी कैन नॉट डू दिस वर्क, we are not able to do community work, or we cannot do some extracurricular activity. So they completely object to it and refuse it, and they never abide to the classroom policies. See, classroom policy is a thing which differ from teacher to teacher. अब एक टीचर की क्लासरूम पॉलिसी कुछ और होगी और दूसरी टीचर की कुछ और होगी. सम टीचर्स दे कम टू द क्लास, दे वांट देयर स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप, विश, या फिर वो क्लासरूम में जब सवाल करते हैं, व्हेन दे आस्क द क्वेश्चंस, दे वांट देयर स्टूडेंट्स टू स्टैंड एंड आंसर. और बहुत सारे टीचर्स चाहते हैं कि दे वांट देयर स्टूडेंट्स टू कीप सिटिंग एंड देन आंसर देयर क्वेश्चंस. सो these classroom policies are different, but the students who want to mismanage the class and who want to create this mismanagement, they do opposite of it. If you want them to be sitting, they will stand up, and if you want them to be to stand, they will keep sitting. So such kind of things it create a chaos in the class. They are never attentive. Obviously they will not be attentive towards the teaching learning process, and they always act as passive learners. इस तरह के बच्चे हमेशा either they are coming late to the class or they are coming early to the class, and talking during the class is very common among them. I have seen in my classes as well, क्योंकि ये मैं आपको अपने experience से बता रही हूँ, because on the daily basis we are also confronting such kind of students who are always trying to create mismanagement of the classes. So they don't hesitate to show their boredom. आप देखेंगे क्लास में एकदम कुछ बच्चे होते हैं फर्स्ट सीट पे बैठ के either they are yawning or they are sleeping or they look out of the window, या फिर बाहर देखने लगते हैं, या फिर कुछ और ही काम करने लगते हैं. If you want them to look at the board, तो वो अपनी कॉपी में कुछ काम करेंगे या अपने बैग में कुछ ढूंढने लगेंगे. So they clearly give this indication to you that they are not interested. So these all are the signs of a very mismanaged classroom.
अब इस क्लासरूम मिसमैनेजमेंट को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट? वी मस्ट नो दैट फर्स्ट. So we say कि all the things that a teacher does to organize students um, in terms of space, time, or whatever material they have, or whatever resources they have, whatever organization they do of all these things for an effective teaching learning process, that is classroom management. आपको क्लासरूम मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं करना है कि आपको बच्चों को डिसिप्लिन करके एक जगह पे सीट पे बिठा देना है. दिस इज नॉट क्लासरूम मैनेजमेंट. यूजुअली हम लोगों के दिमाग में एक यही कॉन्सेप्ट होता है. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू समवन्स क्लास, आप ये देखते हैं कि सब बच्चे खामोशी से क्लासरूम में बैठे हैं, दे आर स्टक टू देयर सीट्स एंड they are not creating any chaos, they are not making any noise. तो आपको लगता है कि this is a well managed classroom, but this is not a sign of a effective classroom management. Classroom management में और भी चीजें होती हैं, like I am saying time भी होता है. Also there are resources, how the resources are being used in a classroom and what methods are being used. फिर ये भी देखना होता है कि जो हमारा एक टीचर जो क्लास में ऑब्जेक्टिव्स लेके जाते हैं, व्हाटएवर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दे सेट फॉर देयर क्लासरूम्स, आइदर दे आर एबल टू अचीव इट और नॉट, तभी हम कहेंगे कि क्लासरूम वेल मैनेज्ड है. अदरवाइज मेकिंग द स्टूडेंट्स सिट क्वाइटली इन द क्लास इज नॉट क्लासरूम मैनेजमेंट. So how to manage your classroom effectively? This poses a great question in front of us. कि ठीक है, बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, दे आर डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं. सेकेंडली हम ये कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड और प्री कोविड एरा ये डिफरेंस आ गया है. तो ऐसा क्या करें हम? What we have to do, what we must do to manage our classrooms effectively. तो हम ये कहते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अप्लाइंग द करेक्टिव मेजर्स. कि स्टूडेंट आर मिसबिहेविंग, यू मेक देम वेल बिहेव्ड एंड यू एडमिनिस्टर सम करेक्टिव मेजर्स. आप उनको कुछ आप ठीक कर दें उनको, हम ये कहेंगे आप ठीक कर दें, या फिर उनको डिसिप्लिन कर दें. तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट, इट इज मच मोर देन दैट. वी से दैट डेवलपिंग प्रोएक्टिव वेज to prevent problem from occurring in itself. किसी प्रॉब्लम को होने से पहले ही हम उसको उसका solution कर दें. That is, we have to develop such ways in our classroom. That is classroom management, to develop and to create a positive and conducive learning environment. So classroom management के ताल्लुक से there are some indicators or there are some I would say there are some points which are very significant in classroom management. तो उसको मैंने इसे divide किया है and I've shown them in the form of this graph. So first I will discuss in relation to the material in classroom management. Material का क्या role है, क्या इसका significance है classroom management में? What material we are talking about? So material means whatever teaching learning material we have, उसका एक अहम रोल होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्लासरूम मैनेजमेंट. कि आपके पास किस तरह का टीचिंग मटेरियल है, आप किस तरह से उसे प्रेजेंट करेंगे इन द क्लासरूम, एंड whether you are able to implement whatever strategies you are implementing, या जो भी आपके पास मटेरियल है, ऑडियो विजुअल है, मान लीजिए आपको कोई ऑडियो सुनाना है या फिर आपको कोई वीडियो दिखानी है, और यू हैव टू यूज दिस स्मार्ट क्लासरूम. सब तो स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए हैं सब जगह, एंड दोज टीचर्स हु नो हाउ टू यूज स्मार्ट क्लासरूम, दे वुड बी नोइंग कि स्मार्ट क्लासरूम्स में मॉड्यूल्स होते हैं मौजूद पहले से. So how you are going to represent them in delivering the instructions in the teaching learning process. तो आपका classroom management बहुत हद तक depend करता है on the TLM, on the teaching learning material you are using, how you are going to represent it. Secondly, it depends on the instruction also, कि आपका जो instruction है, what approach you would be using. आपका child centered, if
like now usually we use child centered method in the school, in teaching the school students. तो child centered में क्या होता है? Child centered में we avoid lecture method, है ना? Either we use lecture cum demonstration or activity based or some other. So classroom management, आपकी एक वेल मैनेज्ड जो क्लासरूम होगी उसमें जो आपका इंस्ट्रक्शन जो भी आप स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, इट विल बी यूज्ड इफेक्टिवली एक वेल मैनेज्ड क्लासरूम में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर आपको अप्रोच लेनी थी, प्रोजेक्ट अप्रोच से कोई भी कंटेंट डिलीवर करना था, वहाँ आपने प्ले वे इस्तेमाल कर लिया, है ना? तो दैट विल क्रिएट मिसमैनेजमेंट इन द क्लासरूम्स। सो क्लासरूम मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ बिठाना नहीं है, टीचिंग लर्निंग के ताल्लुक से या रिलेटेड टू द टीचिंग लर्निंग, what all things are important and what all things should be taken into consideration. So instruction is one of them. पॉलिसीज ऑन प्रोसीजर, हमने कहा कि पॉलिसीज क्या हैं, टीचर को किस तरह से पॉलिसीज बनानी चाहिए और कौन से प्रोसीजर्स वो यूज करेंगे। जैसे हमने कहा कि मेथड्स तो हम जानते हैं कि ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, बट व्हाट कैन बी द टेक्निक्स, व्हाट कैन बी द अदर स्किल्स एंड अदर क्रिएटिविटी दे कैन यूज फॉर डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शंस। time management is very important because we teachers are bound by a limited time period. हमारे पास एक limited time period होता है। The teachers who get 1 hour for their instruction, तो वो भी सिर्फ 50 minutes ही इंस्ट्रक्शन डिलीवर कर पाते हैं। 10 minutes we always keep the scope कि हम क्लासरूम में जाएंगे, we will take the attendance or we'll cater to the problems of the students. Sometimes students come up with their problems, or we keep some time for the discussion. So we get less time, and in that less time, how we will be managing the instruction that has to be delivered, है ना? हमारा फोकस पॉइंट ये होना चाहिए, बिकॉज what is your objective of coming to the classroom? क्लासरूम में जाने का या क्लासरूम में बच्चों का बैठने का मकसद यही है दैट सम लर्निंग मस्ट टेक प्लेस, है ना? बच्चे कुछ सीख कर जाएं। तो आप पूरा टाइम उसमें नहीं स्पेंड कर सकते कि आप बच्चों को डिसिप्लिन करें, आप बच्चों को डांटें, या फिर आप यही बताते रहें कि अभी खड़े हुई और अब बैठ जाइए, और वट एवर इट इज, या फिर आप ये जो आपका मटेरियल है आप उसे ही आप कुछ पिक्चर्स ही दिखाते रह जाएं। यू हैव टू मैनेज द टाइम सो दैट द लर्निंग जो आपने सोचा है कि आज बच्चों को ये सीख लेना है, या फिर जो हमारे एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें सिलेबस कंप्लीट होना है, वी आर एबल टू अचीव दैट। नेक्स्ट, one of the important point that affect classroom management is behavior. Behavior एक ऐसा फैक्टर है जो क्लासरूम मैनेजमेंट को काफी डोमिनेट करता है। जैसे अभी हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया था स्लाइड में, हाउ द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इट डिसरप्ट्स द टीचिंग, इट नॉट ओनली डिसरप्ट्स द टीचिंग, इट ये एक टीचर को जो है उसके कॉन्फिडेंस को भी लो करता है। टीचर लूजेस द कॉन्फिडेंस, टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर्स को कंफ्यूज कर देते हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यू टीचर्स to keep their balance and to keep sometimes मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे ऐसे नए बच्चे होते हैं, they go to the school, जैसे जो बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, they go for teaching practice, तो उसमें बच्चे उनको इतना तंग कर देते हैं कि कुछ लड़कियां रोने लगती हैं। तो बिहेवियर, जो आपके स्टूडेंट्स का बिहेवियर है उसके हिसाब से यू मस्ट नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, है ना? टीचर को ये देखना है कि उनके बिहेवियर को, जो बैड बिहेवियर है या गुड बिहेवियर है उनका, उसको किस तरह से, जिसका गुड बिहेवियर है तो किस तरह से आपको उसको रीइंफोर्स करना है, और जो बैड बिहेवियर है उसको कैसे आपको डिस्करेज करके अपने क्लासरूम को मैनेज्ड रखना है। देन layout is also an important factor in classroom management. आपकी क्लासरूम में आपको ग्रुप डिस्कशन कराने, है ना? But you have individual chairs. The requirement of your class is something else, but you have a different layout of the class. Obviously, when you'll go to the class, you'll spend, I think, half of the time in rearranging the seats. या फिर आपका you have a board facing somewhere else and the chairs
facing somewhere else. तो ये जो layout है ये भी बहुत important है कि you must know what is the requirement of the class. उसके हिसाब से layout होना चाहिए, कहाँ board होना चाहिए, seats किस तरह से arrange होनी चाहिए, कहाँ पर क्या चीज़ appropriate है regarding the infrastructure. So these are some important facts which influences and impacts classroom management. अब कैसे हम उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं द स्ट्रैटेजीज. सो वी मस्ट नो अबाउट द स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट. सबसे पहले जो जरूरी है, इट इज टू एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट ऑन द वेरी फर्स्ट डे. हम लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारे टीचर्स ये गलती करते हैं कि वो फर्स्ट डे क्लास में जाते हैं, सोचते हैं कि आज हमारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट डे है तो हम क्लास में पढ़ाएंगे नहीं, and we will be friendly with the students because it is a very first day. But sometimes we forget that first impression is the last impression. ऐसा नहीं हो सकता that on the first day you are very friendly and from the next day or after few days you want to be strict with them. Whatever you are, you should be on the first day. You should be from the very beginning. उससे ये फायदा होता है कि जब हम ऑन द वेरी फर्स्ट डे, लाइक व्हेन एवर आई गो टू द क्लास, जब भी मैं अपनी किसी नई क्लास को एड्रेस करती हूँ तो मैं हमेशा उनको बता देती हूँ, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई ट्राई टू गेट टू नो अबाउट देम कि वो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, किस प्रॉब्लम्स को फेस करके आ रहे हैं, अपने बारे में भी उनको बताती हूँ सो दैट दे ऑल्सो नो कि उनको किससे डील करना है. एंड also it is very important, I tell them my boundaries. You see, this is tolerant for me and this is intolerant for me. मैं ये तो बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन मैं ये इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगी. ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कम 2 minutes late or 5 minutes late, but you cannot enter the class just 5 minutes before it gets over. बस क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले आप नहीं आ सकते क्लास में एंड यू कैन नॉट क्लेम फॉर द अटेंडेंस. तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें फर्स्ट डे से स्टूडेंट्स पर वाजे कर देनी चाहिए, उनके ऊपर ऑब्वियस कर देनी चाहिए कि दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी टॉलरेटेड एंड दिस इज व्हाट यू मस्ट डू. जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट डे ऐसे नहीं हमें सोचना चाहिए कि फर्स्ट डे है तो पढ़ाना नहीं है. ओके, इफ यू डोंट वांट टू टीच देम, अगर आप चाहते हैं कि आज थोड़ा सा उनको फ्री रखा जाए, बट स्टिल यू ट्राई टू कीप द कनेक्शन with whatever objective it is coming to the class. आप उनको उससे connected रखने की कोशिश करिए. For that purpose you can discuss the syllabus. हम लोगों के पास syllabus होता है तो हम वो discuss कर सकते हैं. For example, you are going to a mathematics class, so you can discuss the syllabus. See, these are the chapters in the mathematics and they are further divided into these topics. We will be going about the teaching learning process in this way. We'll do some project work in this from this unit. So we can do some light talk, but keep them connected to the subject. Efficient use of time, that belongs to the preparation part on the part of the teacher. कि आप क्लासरूम में कितने प्रिपेयर्ड जाते हैं. जैसे मैंने कहा कि TLM आपका है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, तो आप अपना TLM आप प्रिपेयर करके लेके गए हैं या नहीं. मान लीजिए आप क्लास में गए, आपका पावर पॉइंट ही नहीं चल रहा है, हाफ ऑफ द टाइम इज वेस्टेड इन दैट. अब जब आधी क्लास उसमें चली गई और फिर आपकी क्लास शुरू होते शुरू हो गया एंड देयर इरप्ट्स सम प्रॉब्लम, इट कैन इरप्ट्स एनी टाइम, तो आपका टीचिंग आज का वहीं फेल हो गया एंड lot of the time is being wasted. Next day you come up with some other, you want to show some experiment. अब आप उसमें in one of my class I saw कि एक बच्चा जो है वो एक experiment दिखा रहा था and they were not prepared for any errors. आपको एरर्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए. तो उनको कुछ बैलून दिखाना था और वो उनका बैलून जो है वो वहीं बर्स्ट हो गया एंड दे डिड नॉट हैव अ बैकअप और वो एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाया एंड लॉट ऑफ द टाइम वेस्टेड इन दैट ओनली. सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड. जैसे हमने कहा कि प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, मतलब प्रॉब्लम अगर होने से पहले आप उसके लिए तैयार रहें. अगर आपको पता है कि आपको यू नीड अ बलून, यू वांट टू इन्फ्लेट अ बलून एंड शो देम द चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ समथिंग, तो आप एटलीस्ट ये प्रिपेयर रहें कि हो सकता है कि एक बलून के साथ ऐसा हो जाए, तो वी मस्ट बी प्रिपेयर विद द अदर बलून.
है ना। मान लीजिए आप चाहते हैं कि पावर पॉइंट से पढ़ाना, आप पावर पॉइंट लेके गए हैं क्लास में और लाइट चली गई, now you do, and this is the ICT now, we are dependent on ICT. और फिर अगर ऐसा होगा तो then what to do, फिर आप क्या करेंगे? सो you must always be prepared with the second plan कि कैसे आप उसको यूज करके, मे बी इफ यू वांट, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, कुछ आप हैंड आउट अपने पास रखिए कि अगर आपका पावर पॉइंट नहीं चला तो आप यू कैन यूज योर हैंड आउट एंड यू कैन गिव द इंस्ट्रक्शंस. Also, very important is consistency. Consistency होना बहुत important है. ऐसा नहीं, if you want your students to be disciplined, if you want a management in the class, you have to be consistent. और उसके लिए आपको पीछे पड़े रहना पड़ता है स्टूडेंट्स के. अगर आप चाहते हैं कि वो आपको दे मस्ट बी डिसिप्लिन और वो क्लास में बात नहीं करें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको एक दिन चेक करें, 2 दिन चेक करें एंड थर्ड डे यू लीव देम कि ठीक है इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है और हम अब कुछ नहीं कर सकते, तो सुनते ही नहीं है. यू कैन नॉट डू दैट. अगर आप कोई पॉलिसी, कोई रूल अपनी क्लास में एनफोर्स करना चाहते हैं, देन यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली. आप चाहते हैं कि बच्चा, यूजुअली इट हैपेंस विद मैथमेटिक्स मोर, एंड एज आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, तो मैं जानती हूँ कि मैथमेटिक्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. और एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें होमवर्क बहुत ज्यादा होता है और कभी बच्चों का होमवर्क कंप्लीट ही नहीं होता है. The teacher gives so many questions to solve in homework, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, आधी क्लास का होमवर्क ही नहीं होता है. फिर they cannot wait for them to complete the homework, they go to the next topic. फिर उसमें इतना होमवर्क मिलता है तो वो पीछे का वाला होमवर्क करेंगे या फिर उस टॉपिक का होमवर्क करेंगे. ऐसे करते करते they are never able to understand what is going on in the class. कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि पुराना जो उनको पढ़ना था, सीखना था, समझना था, जो स्किल्स उनको अचीव कर लेनी थी, वो सीख ही नहीं पाते हैं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं फ्रेम कर पाते हैं, तो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ इट. और ये प्रॉब्लम हमेशा होता रहता है. टीचर के पार्ट पे ये जरूरी है कि टीचर कंसिस्टेंटली ये चेक करें कि बच्चों ने वो होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं, देन ओनली दे मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अगर वो नेक्स्ट पे मूव ऑन भी कर गए, देन ऑल्सो दे हैव टू टेक केयर कि बच्चों ने वो पहला वाला होमवर्क, जो बच्चे पीछे रह गए थे, उन्होंने वो होमवर्क किया है कि नहीं किया है ना. हम बार बार कह रहे हैं कि हम चाइल्ड सेंट्रिक मेथड अब इस्तेमाल करना है, एनईपी कह रही है कि चाइल्ड सेंट्रिक मेथड होना चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लासरूम एनवायरनमेंट इंक्वायरी बेस्ड है ना. हम ऐसे थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, वी डोंट हैव टू टीच according to NEP or according to child-centric method. A teacher is not a knowledge giver. टीचर जो है वो सेंटर पार्ट नहीं होता है. टीचर नॉलेज देता नहीं है, टीचर इंस्टिगेट करता है नॉलेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स. सो वी कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि बच्चे सवाल करें, है ना, वो पूछें. हम जो भी बात कहें वो बिना सोचे समझे उसका यकीन ना कर लें कि मैं, अच्छा ये मैम ने कहा, दिस इज द फैक्ट, ओके दिस विल बी द फैक्ट. नो, द क्लासरूम एनवायरनमेंट मस्ट बी इंक्वायरी बेस्ड. और जब इंक्वायरी बेस्ड होगा तो वो सोचेंगे कि जो कहा गया है या फिर जो हमें सिचुएशन दी गई है तो उसमें क्या होना चाहिए, एंड दे विल आस्क क्वेश्चंस. ये इसलिए नहीं कि अब आप सोचेंगे कि मैनेजमेंट, हाउ इट इज रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट. ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट, बिकॉज इफ द स्टूडेंट्स वोंट बी इंटरेस्टेड इन द क्लास, then they will never be attentive in the class. They will never enjoy the class. They will never crave to come to the class. So this is an integral part कि हम क्या क्लासरूम में जो कर रहे हैं वो बहुत important है. Also, we talk about the inclusive classrooms, है ना. इंक्लूसिव क्लासरूम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इंक्लूसिव क्लासरूम्स क्या होते हैं. सो वी से कि इंक्लूसिव क्लासरूम इज अ क्लासरूम इन विच वी टीच ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. ऑल में क्या होता है, ऑल में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई बच्चा किसी भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, मे बी दे हैव सम स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, तो उन सभी बच्चों को हम ये कहते हैं कि स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं. तो दे कैन बी ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड, और दे कैन बी visually challenged, or they can be hearing, they have hearing impairment. तो सब तरह के बच्चे
or even if they are coming from a very low socioeconomic background, also some gifted students, they all must be taught in one class. हम ये कह रहे हैं कि इंक्लूसिव क्लास होती है. तो वहाँ जहाँ पर हमारे पास इंक्लूसिव क्लासरूम है, कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं हमारे पास एवरेज हैं, सम स्टूडेंट्स आर दे आर गुड, ब्रिलियंट, एंड सम आर गिफ्टेड. यूजुअली हम लोगों ने देखा होगा कि क्लासरूम में हम कहते हैं कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन क्लासरूम में बहुत शरारत करता है. ही ऑलवेज क्रिएट्स डिस्ट्रप्शन इन द क्लास. उसकी क्या वजह होती है? उसकी ये वजह होती है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी नॉलेज थर्स्ट एवरेज स्टूडेंट्स से ज्यादा होती है. दे वांट अ मोर चैलेंजिंग टास्क टू सेटिस्फाई देयर नॉलेज थर्स्ट, बट वी फेल टू डू दैट. तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों को इंगेज रखने के लिए ऐसे बच्चे क्लासरूम में मिसमैनेजमेंट क्रिएट ना करें. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर दैट वी एनकरेज सच एक्टिविटीज विच नरिशेस देयर क्रिएटिविटी, है ना, और उनको एक चैलेंजिंग टास्क मिले. ऑल्सो हम ये भी कहते हैं कि क्योंकि इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने की इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज हमारे पास अब यूनिडायमेंशनल अप्रोच नहीं है इंटेलिजेंस के. We say we have a multi-dimensional approach of intelligence. तो हमें एक बच्चे में ज़रूरी नहीं है कि उसकी मेमोरी बहुत तेज़ है और वो चीज़ों को जल्दी, he or she learns the facts very quickly and is able to reproduce in the exam, in the paper pen test, और उस बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं. That is the most intelligent child. But we need to see the different talents of the students. कि हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हो, या बहुत अच्छी स्टोरी राइटर हो, या कोई बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिशियन है. तो वी नीड टू एनकरेज द क्रिएटिविटी. ऑल्सो कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग अप्रोच होनी चाहिए. अगर क्रिएटिविटी है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो बहुत ज़रूरी है कि कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच शुड बी टेकन अप बाय द टीचर्स. कोलैबोरेटिव टीचिंग का मतलब ये है कि टीचर्स, दो टीचिंग लर्निंग जब हम कोलैबोरेटिव तो हम सोचते हैं कि ग्रुप में स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इन द ग्रुप्स, बट व्हाट व्हेन वी से कोलैबोरेटिव टीचिंग, दैट मीन्स टीचर्स मस्ट आल्सो लर्न फ्रॉम द टीचर्स, है ना. बहुत बार ऐसा होता है, स्कूल्स वगैरह में भी ऐसा होता है कि एक ही क्लासरूम में एक टीचर बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं उस ग्रुप को, और दूसरे टीचर जो हैं उनकी क्लास में बहुत शोर होता है, बच्चे बहुत शोर करते हैं, कोई बैठता नहीं है. बहुत सारे बार ऐसा भी होता है, बच्चे बताते हैं कि बच्चे किसी टीचर से लड़ जाते हैं, उनकी क्लासरूम में बहुत हंगामा करते हैं, और किसी टीचर की क्लासरूम में बहुत वेल मैनेज बैठे रहते हैं. तो कोलैबोरेटिव टीचिंग अप्रोच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि टीचर्स भी टीचर्स से सीखें हाउ टू मैनेज द क्लास. एंड लर्निंग अप्रोच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स से सीखें, बच्चे अपने साथियों से सीखें कि किस तरह से दिस गिव राइज टू द लीडरशिप क्वालिटीज ऑल्सो अमंग द स्टूडेंट्स. ऑल्सो हम अच्छी बात, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, जैसे हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों में, मल्टी टैलेंट इज देयर. तो मान लीजिए कोई बच्चा किसी अपनी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, मे बी द अदर चाइल्ड हैज अ बेटर सॉल्यूशन टू हिज और हर प्रॉब्लम, सो दे कैन लर्न अमंग देमसेल्व्स ऑल्सो. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर मस्ट एस्टेब्लिश ए पॉजिटिव रिलेशन विद द क्लास. मोस्टली टीचर्स बहुत ड्राई हो जाते हैं and they don't think that it is usually with the maths, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स ही हूँ तो इसलिए बार बार मेरे दिमाग में मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल आ रहे हैं. तो we say कि mathematics teachers are very dry in nature because as soon as they come to the class, वो बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, और बोर्ड पे बस सवाल हल कर देते हैं एंड बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं. सो द स्टूडेंट्स दे फेल टू एस्टेब्लिश a rapport between a teacher and the student. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए एक पॉजिटिव रिलेशन हो between the teacher and the student. आप देखते हैं कि कुछ टीचर्स होते हैं बहुत फ्रेंडली भी होते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी फर्म एट द सेम टाइम. तो स्टूडेंट्स उनसे डरते भी हैं और शायद इसीलिए उनकी बात मान भी लेते हैं, एंड दे आर सो अप्रोचेबल कि वो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कर देते हैं. तो सच टाइप ऑफ पॉजिटिव रिलेशन इज रिक्वायर्ड. ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चों को इतनी छूट दे दें कि बच्चे अपनी वाली करना शुरू कर दें एंड दे कीप ऑन दे स्टार्ट डोमिनेटिंग यू. ऐसा भी नहीं है, होना चाहिए, बट यू मस्ट बी अप्रोचेबल.
Praise is a powerful tool. पता नहीं कितने लोग इस बात को मानते हैं, but it is, yes it is. हम कहते हैं कि it is very important to reinforce the good deeds, good actions of the students. अगर हम चाहते हैं कि repetitively बच्चों में अच्छा behavior showcase हो, display हो, तो हमें उसको positive reinforcement देना चाहिए, जो कि हम कर सकते हैं through praising them. थ्रू प्रेजिंग देम. यू एंटर द क्लास, आपकी क्लास बहुत डिसिप्लिन्ड है, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं, यू एंटर द क्लास. तो अक्सर ऐसा होता है कि टीचर्स कहते हैं कि वेरी गुड, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, एवरीबडी इज सिटिंग सो क्वाइटली एंड इन अ डिसिप्लिन्ड वे. तो ये एक तरह का रीइंफोर्समेंट होता है. हम ये रिमार्क्स दे देते हैं किसी को, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है. आई यूजुअली गिव माई स्टूडेंट्स, आई मेक दिस पॉइंट कि मैं अपने स्टूडेंट्स को गुड, नीट वर्क, वेल डन इस तरह से जरूर देती हूँ. दो आई एम डीलिंग with big students, मैं pupil teachers, prospective teachers के साथ डील करती हूँ, but still they are also our student. और मुझे ये लगता है कि अगर उन्होंने कोई काम अच्छा किया है और मैं ये चाहती हूँ कि वो बार बार इस काम को रिपीट करें, अच्छे काम को, तो I need to reinforce them, I need to praise them. It is not important कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से फीडबैक को वेलकम करें. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू मैनेज द क्लासरूम एंड टेक स्टूडेंट्स फीडबैक. स्टूडेंट के फीडबैक को आप उतनी ही अहमियत दीजिए. इन मैनी ऑफ द क्लासरूम्स आई हैव सीन कि अगर बच्चे कह देते हैं कि हमें ये समझ, अगर वो इतना भी बोल देते हैं कि वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, तो द टीचर्स टेक्स लॉट ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट हिम और हर. उनको लगता है कि ये हमारी बेइज्जती हो गई. ऐसा नहीं होना चाहिए. नथिंग शुड बी पर्सनल फॉर द टीचर. आप लोगों को पर्सनल अटैक नहीं लेना है हम सबको. वी कैन ऑलवेज थिंक इट एज अ फीडबैक. नहीं समझ में आया होगा, मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम with, it can be a problem in conveying my message to him or her, or it can be a problem in comprehending. उस बच्चे ने सही से information comprehend नहीं किया, that is why he is not able to understand it. So it is important that we must welcome their suggestions also. और ये कभी-कभी हमारे लिए बहुत आसान भी हो जाता है. It becomes very easy for the teacher because I make it a point whenever I go to the class, I give my students this option कि I have two ways, either I can teach this way or I can teach that way. आपको कौन सा feasible लग रहा है, which one do you like? And whatever they choose, I go their way. और उससे क्लासरूम एक तो बहुत एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होता है एंड इट इज इजी फॉर मी एज वेल, क्योंकि शायद उस तरीके से उनकी लर्निंग बेहतर होती है एंड इट इज मोर इफेक्टिव देन द वे मे बी आई एम ट्राइंग टू एनफोर्स सम माय ओन वे ऑन देम. तो इट इज बेटर वी वेलकम देयर स्टूडेंट्स. और फिर अल्टीमेटली हम लोगों के पास ये भी फायदा होता है, मे बी सम प्रॉब्लम एरप्ट्स और उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई एरर आ जाता है, तो वी कैन ऑलवेज टेल देम it was your way, it was your choice. It is day by day we see social abuses हैं. Even there are अभी हम लोगों ने violence against women भी सब जगह celebrate किया है. तो it is very important that we create a safe learning environment for every section of the society. हम ऐसा learning environment create करें जहाँ पर कोई bullying ना हो, है ना, जहाँ पर कोई partiality नहीं हो. तो ऐसा learning environment ही एक effective teaching learning process को अमल दे सकता है. Then it is very important that we must ensure everybody's participation, जो कि बहुत ज़रूरी है. We often label the backbenchers as unintelligent students of the class. हम कहते हैं बैक बेंचर है, ये बच्चा नहीं कर पाएगा, he is not able to do this, he is not getting good grades because he is the back bencher. लेकिन वो बच्चा पीछे बैठ के करता क्या है? Have you ever know interested in the teaching learning process? Maybe you are not involving that child in your teaching learning process. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर they even don't know the name of their students. उनको नाम तक नहीं पता होते हैं. तो when you don't know the name, you never try to address them.
You never try to make them feel significant or a part of the classroom. So it is very important कि सबका पार्टिसिपेशन हो क्लास में, है ना. आपके पास कोई काम नहीं है, आप उस बच्चे को बुला के आप ये कह दीजिए कि इफ यू हैव सम चार्ट टू हैंग, तो आप कह दीजिए आप चार्ट हैंग करिए, ओके यू इरेज द बोर्ड, और व्हाट इज योर ओपिनियन, यू आर व्हेन यू आर एड्रेसिंग द क्लास, आप डिस्कशन क्लास में कर रहे हैं, तो यू मस्ट नो द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. आप नाम लेके उनको, जो बच्चे अगर पीछे हैं वो आपकी बात नहीं भी सुन रहे हैं, तो यू मस्ट टेक आउट देयर नेम्स, कॉल देयर नेम्स एंड आस्क देम क्या आपका क्या ओपिनियन है, even though you know they are not going to answer, but still make sure that you make them a part of your teaching learning process. Assessment learning process का एक बहुत अहम हिस्सा है. It's very important integral part, assessment of the learning process. So assessment should be such that it should look forward. Assessment का मकसद ये होता है to see whatever objectives we set before our teaching learning process, either we are able to achieve it or not. And if we have not achieved it, then what modifications, what interventions should be made. It can be also a diagnosis. मान लीजिए आपने assessment, sometimes it acts as a diagnosis also, diagnosis of the problem. हम बनाते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाते हैं ये देखने के लिए कि बच्चे ने एक पर्टिकुलर टॉपिक में व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, एंड देन अकॉर्डिंगली वी सजेस्ट रेमेडीज. ओके यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, देन दिस कैन बी रेमेडी फॉर दैट. ठीक है, आप ये कर सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा. तो असेसमेंट का मकसद वो होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट इज टू हेल्प, इज टू डू रेमेडी, not to pull them backward. Usually teachers they just mark the grades and they just leave it like that, they leave the assessment. बहुत बार ऐसा भी होता है जब हम टीचिंग मेथड्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि असाइनमेंट एक मेथड होता है ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि हाउ कैन इट बी अ मेथड ऑफ टीचिंग, हाउ कैन बी इट अ मेथड ऑफ टीचिंग, वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम असाइनमेंट. तो वो इसलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मकसद पूरा नहीं हो पाते बिकॉज वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट एज द वे इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. एवरी मेथड हैव सम रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड. अब आपने कोई असाइनमेंट दिया है तो यू विल गिव फीडबैक, बट हाउ मेनी टाइम्स डू वी गिव फीडबैक फॉर दिस असाइनमेंट्स? वी नेवर डू. हम बच्चों को असाइनमेंट टॉपिक्स असाइन कर देते हैं, वो इंटरनेट से कुछ मटेरियल निकाल के उस पर कॉपी कर देते हैं, और आधे बच्चों का असाइनमेंट तो बिल्कुल एज इट इज ही होता है, हम उसमें कुछ मार्क्स देते हैं और फिर वो मार्क्स उनकी मार्कशीट्स में चढ़ जाते हैं. तो ये बट असेसमेंट इज नॉट, असेसमेंट मेथड इज नॉट यूज दैट वे. आप बच्चों को मॉनिटर करिए, यू गिव योर सजेशंस इन बिटवीन आल्सो. इफ यू सी दैट they're going the wrong way, you give suggestions, mark दीजिए, और suggestions for the future work. But usually we don't do that. When we talk about classroom management, और हमने कहा कि behavior is an integral factor which affects it a lot of times. बहुत बार ऐसा होता है कि क्लासरूम में ऐसी चीजें हो जाती हैं, some incidents which are more than a mischief, and it needs an immediate intervention of the parents. So it is very important that you keep the parents informed and you involve the parents in classroom management. Time to time भी बहुत ज़रूरी होता है कि time to time भी parents को अपने बच्चे का feedback मिले. What are they doing in the class? Are they very mischievous or they are obedient or whatever they are doing? So it is very important, if you want your class to be managed, you inform them and you involve them. So in all these things what we have discussed just now, उसमें teacher का क्या role है? What is the role of a teacher in managing the classrooms? We say कि हमने कहा कि teacher जो है approachable होना चाहिए, congenial होना चाहिए, friendly होना चाहिए, because in child-centric method teacher is not a knowledge giver. टीचर वहाँ पर एक गाइड भी है, टीचर आपका फ्रेंड भी है, टीचर इज योर मेंटर ऑल्सो. सो फॉर दैट पर्पज यू नीड अ टीचर टू whom you can take up your problems. आप उनके पास अपने प्रॉब्लम्स लेके जाएं, उनसे गाइडेंस लें. बट इफ यू आर नॉट फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि आप
उनके गले में हाथ डाल के घूमे, दैट इज नॉट द डेफिनेशन हियर। फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि आप एक फ्रेंड होके उनके प्रॉब्लम्स को समझें, लाइक ए फ्रेंड डज। यही एक हम लोगों के अंदर कमी होती है कि हम उस नज़रिए से, उस लेंस से कभी बच्चों की प्रॉब्लम्स को एसेस नहीं करते हैं। और यही वजह होती है कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स हमेशा अपने फ्रेंड्स से ही डिस्कस करते हैं, देयर फेलो मेट्स, जो भी उनके क्लासमेट्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑफ देयर ओन एज, और उसी में बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। दैट इज द रीजन, दैट इज द मेन रीजन ऑफ द मिसगाइडेंस। If we take up a friendly approach, a congenial approach, so maybe we are able to guide them better. तो जरूरी है कि टीचर एक फ्रेंडली अप्रोच भी रखें। A teacher needs to have a good personality and be a role model for them. Good personality का मतलब ये नहीं है कि they are wearing very fashionable clothes or they are wearing good clothes. Good personality means a well balanced personality. We want our students to come on time. हम चाहते हैं कि बच्चे रेगुलर हैं, ऑन टाइम आए, बट वी ourselves are coming late. हम अपने स्टूडेंट्स में ऑनेस्टी इनकलकेट करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बेईमानी करते हैं. So if you want your classroom, if you want your students to be well balanced, to have well balanced personality, so you have to show them, आपको खुद एक रोल मॉडल उनके सामने बन के आना पड़ेगा, then only they will follow you, and your class will be managed then. Also, it is very important that deep knowledge is required. A good teacher can only manage the class if he has a good command over his subject. इस बात पर मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आता है. When I was going for teaching for the first time, my father told me कि you are going to teach mathematics to senior students. एक मैथमेटिक्स क्लास तभी मैनेज्ड रहती है, either the teacher is very strict or the teacher has a great command over the subject, है ना. तो मैंने I went for the second way, and because my appearance was not such that I could be a very strict teacher, I appeared to be a very strict teacher to them. So I tried to have a great knowledge of my subject. I tried to have a good command over my subject, which made my classroom management very easy. Which it was because I taught the classes who were very, very notorious in the whole school. But if you have a good knowledge of your subject, if you have command over your subject, your classroom will be automatically managed. A teacher needs to be up to date. ये तो बहुत ही ज़रूरी है. जैसे हमने कहा कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड में during the COVID, अगर मैं बात करूँ तो during the COVID, the teachers who were not skilled with ICT techniques, they faced a lot of problems in teaching and learning. तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को अप टू डेट रखें, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज कि नई क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारी फील्ड में, व्हाट आर द न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजीज और टेक्निक्स इन आवर फील्ड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो अ टीचर मस्ट बी गुड कम्युनिकेटिव. अच्छे से आप, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट द मैसेज विच यू वांट टू कम्युनिकेट इन द क्लियर वर्ड्स, देन इट इज़ ऑफ नो न्यूज़. यू आर नॉट अ गुड टीचर देन. So a teacher has to have a good communication skill and also good listening skill. हम ये कहते हैं कि वो ही अच्छा बोल सकता है जो who is a good listener, जो बात को सुनता है. तो all the things are connected, you see. हम ये कह रहे हैं कि आप बच्चों को तभी गाइड कर सकते हैं when you are friendly. जब बच्चे आपकी बात सुने, आप अपनी बात बच्चों तक पहुंचा दें, और they have this उनका आपके अंदर ये फेथ हो कि that you will be able to solve their problems. Also a teacher needs to have a good sense of humor. बहुत सारी बार क्लास में ऐसा होता है, बहुत serious discussions होते हैं, and sometimes to break the ice we need to have a good sense of humor. तो a teacher needs to have, ऐसा नहीं है कि जिसका sense of humor अच्छा नहीं है तो वो एक अच्छा टीचर नहीं है. But it can be the sugar on the top. So a teacher can have a good sense of humor.
Also, very important, teacher must be sympathetic and empathetic. टीचर के अंदर सिंपैथी और एम्पैथी दोनों होनी चाहिए. यू मस्ट नो, यू मस्ट बी एबल टू step in their shoes and see what problems they are facing. जैसे adolescence होता है, हम कहते हैं adolescence is a period of stress and storm. They go through a lot of changes and they go through a lot of problems. So if you are sympathetic and empathetic, maybe you are able to solve their problems better, and and in turn your class will be managed. So these were some of the important, I won't say that these are the all the strategies of classroom management, but I would say some of the main strategies of classroom management. I hope that it will be fruitful for you, क्योंकि classroom management का aim सिर्फ ये नहीं है to make them disciplined, but to maintain a positive and productive learning and good friendly, conducive friendly learning environment. हमारी क्लासरूम से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं in terms of standard and the environment. We expect when even the parents, they have a lot of expectations when they are sending their children to the school. They want them to learn some etiquettes, to get disciplined, to learn some skills and to excel in their life and to have a better satisfied life. So for that purpose, see, one little thing, this classroom management can give a lot of satisfaction. And as I started my lecture with the quote that the destiny of a nation is being nurtured in the classroom. So we as teachers must take this classroom management very seriously, because we are nurturing the future of the nation. So I say thanks to all of you for listening to me so attentively and patiently. Uh, this is my email ID. If somebody wants to contact me, they can contact me. Or अगर किसी का कोई सवाल हो, तो I would like to take the questions. If somebody. Yes, participant. Want to ask something regarding this? Assalamu alaikum. Yes, walaikum salam. Yes, sir. Sir, I want to ask one question, sir. Kindly tell me your name. Sir, my name is Mohammad, sir, and I want to know that for the proper management of the class, should we introduce camera in the classroom or not? Because we have seen that presently in a many private school, they have installed the camera inside of the classroom just to have a better management of the class. Should it be done with the children or not? Just I want to know your opinion. Yes, sir. Many years back, I worked in a school where they had already installed cameras in the classrooms. So, if a teacher is so much confident, I don't think it would make any difference to the teacher, because the teachers oppose for the cameras because they think it will affect the effectiveness of their teaching. You know? They become very conscious of the teaching. But if a teacher is confident enough, I don't think it will it will have any impact on the teacher. But yes, in turn, it has impact on the students, because as I am telling you कि school में ऐसे हमने काम किया है कि वहाँ cameras installed there, and students were really notorious. So they always had that fear. Even if the camera is not working, we used to tell them that director of the school would be seeing you and he's observing you. So they always had this thing in mind that they are under observation. So it worked for them. Thank you. One thing I also add here, Alana Sahab, actually, this is not the problem, the class room management. Actually, is this a security problem? So that the school management ने सोचा कि भी क्लासरूम में अगर क्या सीसीटीवी कैमरा हो जाएगा तो बहुत सारी एक्चुअली इंसिडेंट ऐसे हुए क्लासरूम में, जैसे कि मर्डर का केस हुआ और बहुत सारे थेफ्ट के केस हुए, झगड़े के केस हुए. तो इसमें जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था कि और
उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि टीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर जब प्रॉब्लम्स हुई तो ये गाइडलाइन इशू की गई कि क्यों ना जो टीचर्स जो स्कूल्स है उनमें हम लोग एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाए। तो उसी के सिस्टम पर ये सीसीटीवी कैमरा एक्चुअली द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी आल्सो, नो। यस, क्योंकि जैसे सर हम डिस्कस कर रहे थे कि सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस हो चुके हैं जो बच्चों के मतलब बुलिंग के केसेस होते हैं ऐसे, तो उसमें ज़रूरी है या फिर जेंडर इश्यूज होते हैं हमारे साथ, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि कैमराज इंस्टॉल हों वेयर वी हैव कोएड ऑल्सो। तो उससे एक हमारी सर्विलेंस रहती है और सेफ्टी पर्पस से भी इट्स वेरी इफेक्टिव। Yes, anyone else? Assalamualaikum, ma'am. This is Irfani. I don't have any question. I just want to thank you. It was really very, informative session. There were a lot of things which we learned through this session. So ultimately, since I'm a teacher I'm teaching in university. I think it's basically the teacher who knows how to handle the classroom and how to create balanced and manage how to maintain the management of the class. So once again, a very thank you, and it was really very good and informative session. Thank you. Thank you, Irfani. Irfani, I want to ask, where are you from? Irfani? I'm actually from Islamic University of Science and Technology. It's located in Amantipura, Jammu and Kashmir. Islamic University of Science and Technology, Amantipura, Jammu and Kashmir, sir. I'm actually alumni. Yes. I'm from AMU, actually. I have done my PG from AMU only. Good, very good. जो आज का जो सेशन था वो आप लोगों को कैसा लगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए ये एक्सीलेंट, एवेंसम, है ना, गुड, जो भी आप मतलब जो यू वांट टू से समथिंग अबाउट द टुडेज सेशन, तो चैट बॉक्स में प्लीज चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। और एनीवन वांट टू, शिवम कुमार हैज रेज्ड हिज हैंड, वांट टू आस्क समथिंग। शिवम कुमार, यस पूछिए शिवम कुमार। Yes, sir. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Okay. Yes, Shivam. As ma'am said, most teachers don't listen, they intend to understand, but mostly teachers listen to reply, and they do not try to find out the reason behind why the students are so notorious. So, ma'am, how we can find those hidden problem in the child? See, as I said, the teacher is also a guide. तो टीचर के अंदर खुद ये क्वालिटी होनी चाहिए टू एनालाइज, टू एसेस व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, एंड दैट कैन बी डन थ्रू इंटरेक्शन ओनली, है ना। बहुत सारी हम क्लासरूम एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल जाता है, या बच्चों को ऑब्जर्व करके पता चल जाता है। जैसे क्लासरूम में अक्सर ऐसा होता है, देखा गया है कि आप बोर्ड पर लिखते हैं और पीछे वाले बच्चे उठ के आ जाते हैं आगे से, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी फ्रॉम द बैक बेंचेस। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्लासरूम में आई टोल्ड देयर पेरेंट्स कि यू गेट देयर आई साइट चेक्ड, मे बी दे हैव अ वीक आई साइट, या फिर स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये टीचर पे ही डिपेंड करता है हाउ ऑब्जर्वेंट यू आर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, हाउ यू डायग्नोज देम, how much you try to interact with them and try to know about their problems. So it depends on the teacher. The more you interact with them, the more you give them scope, the more you get to know them better. And yes, a good teacher is able to do that, is able to diagnose the problems among the students. इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ लेक्चर मेथड नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप जाएं नॉलेज दे दें बच्चों को, you won't be able to know your students unless you establish a rapport between you and your student. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Anyone else?
Yes, sir. Yes, ma'am, please. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम Yes. It was a very informative session, but there is one question I Kind, would like to kindly ask. tell, Like most, kindly tell us your name and from. okay, I'm Hunfa from Department of Education, AMU, and there is one question to ask. Like most of the teachers, they provide the academic knowledge, but most of the classes lack the competitive knowledge. Is it important to include it in the classroom also? what do you mean by the competitive knowledge? Like, ma'am, whatever is required to clear our competitive exams, because at the end of the day, it is required. On the objectives of the teaching learning process. टीचिंग क्लासरूम टीचिंग के दूसरे मकसद होते हैं और आप जो कह रही हैं कि टू अचीव समथिंग इन लाइफ इट हैज अ डिफरेंट गोल. क्लासरूम में हम सबको आइंस्टाइन नहीं बनाने का मकसद रखते हैं. क्लासरूम में हम हर किसी को आइंस्टाइन बनाने का मकसद रखते हैं. Yes, सो ma'am. वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, है ना. वी कम टू द आपने आप एमएड की स्टूडेंट हैं, आपने बीएड किया होगा, तो आपने कुछ आप लेसन प्लान करती हैं, तो यू सेट सम ऑब्जेक्टिव्स फॉर दैट. The students will be able to learn some skills, the students will be able to inculcate the values, they will be trained into doing certain sort of things. So these are the objectives of the classroom. Now also it depends a classroom, because we have a mixed clientele here, as I am addressing a mixed clientele. तो यहाँ पे स्कूल के टीचर्स भी हैं, तो क्लासरूम टीचिंग स्कूल के लेवल पर उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. एंड व्हेन यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन, दे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, और उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी या हमारी जो ज़रूरत है, जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, इट इज़ फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली. आप ये देखिए, किसी भी स्कूल में बच्चों को मेडिकल क्लियर करने की एजुकेशन नहीं दी जाती है ना, बिकॉज हम उनको चलना पहले सिखाना चाहते हैं, दौड़ना बाद में. दौड़ तो वो खुद भी लेंगे, लेकिन पहले उनको चलना तो आए, है ना. और जहां तक आप बात कंपटीशन की कर रही हैं, तो मैंने कहा कि हमारी तो इंक्लूसिव क्लासरूम्स हैं. वी हैव टू केटर टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्लो लर्नर्स, ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स ऑल्सो, है ना, सम वीक स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो अगर हम सब बच्चों को कॉम्पिटिटिव नॉलेज देंगे, तो मुझे लगता है कि वी वोंट बी एबल टू इवन हैंग अप विद द बेसिक्स, है ना, विद द फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ द टॉपिक व्हिच वी वांट टू गिव टू देम. Okay, thank you, ma'am. Sayyid Hayat. Yes, sir. Assalamu Want alaikum. to ask something? Yes, sir. Hello. Yes. Hello. Yes. Yes. Yeah, you are audible. My question is, with madam. So she talked about humorous in teaching. So how to create humor in teaching? Can you please explain some more about this? ह्यूमर इन टीचिंग, एज आई टोल्ड, कि ऐसा नहीं है कि आप क्लासरूम में आप जाते हैं एंड इट इज़ एनी टीचिंग टेक्निक. ह्यूमर इज़ नॉट ए टीचिंग टेक्निक. जैसे हम कहते हैं कि इट कैन बी यूज्ड एज ए जार्गन, है ना. आप क्लास में कोई सीरियस डिस्कशन हो रहा है, आप बच्चों को लाइट मूड करने के लिए आप कोई भी बात कह सकते हैं आप. तो दैट इज अ ह्यूमर, बट यू कैन नॉट यूज ह्यूमर एज ए टीचिंग टेक्निक. हाँ, जहाँ पर जैसे आर्ट एंड एजुकेशन होता है, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो एक तरह का विजुअल आर्ट हो सकता है. दैट स्टैंड अप कॉमेडी फॉर एग्जाम्पल एक विजुअल आर्ट है, ठीक है. तो आप वहाँ पर, एंड इफ यू आर गिविंग अ ट्रेनिंग इन दैट, तो वहाँ पर आप सिखाएंगे, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड, दिस स्किल ह्यूमर इट इज रिक्वायर्ड, है ना. लेकिन क्लासरूम में इट कैन बी यूज्ड. मैंने कहा कि ये एक ऑप्शनल चीज है कि आप कोई हंसी की बात कर दें क्लास में, तो बच्चे थोड़ा सा लाइट मूड में आ जाते हैं. तो टू डू दैट,
to kill the boredom. And it is mainly important to kill the boredom of the class, क्योंकि कभी कभी जब बहुत ऐसी बातें होती हैं जो serious होती हैं, so you want to kill the boredom of the class. That's it. Thank you, madam. Thank you so much. Sir, your Sir, you are voice is not- not audible. Anyone else want to ask something? Otherwise, we conclude this session. Yes. Okay, thank you very much, everyone, for joining this wonderful session regarding teacher training program. And thank you, ma'am, for coming for this workshop and giving a wonderful uh, speech and lecture regarding effective classroom management. And every participant, uh, we will uh, we will see you tomorrow on the another topic. The resource person is Dubey ma'am is available tomorrow at 6 p.m. No? 6 p.m. So thank you very much, everyone, for joining this wonderful session. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you.